अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम तो सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो चलें, अच्छा है। जो हमारे आज का स्टार्टिंग का इम्पोर्टेंट काम था तो वो तो सब लोग मौजूद हैं उस तरह से, लेकिन फिर भी हम चलें 6:35 पे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि क्वेश्चंस हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे प्रेजेंटेशंस जो हैं वो स्टार्ट से सुने। सो शेरबानो, आपका ये कौन सा है प्रॉब्लम नंबर? Sir, it's problem number 3, and I'm presenting 7, 8, and 9. प्रॉब्लम नंबर 3। Yes, polynomial divisibility. राइट। और वो आप सारे पार्ट्स उसके करेंगे? Sir, मैं पहले तो it's 10 minutes, तो फिर I have 9 parts, तो मुश्किल राइट। से 3 parts इसमें हो रहे हैं, तो and then I also needed to go over some refinements for the first 2 parts, so I was thinking today I'll do that, and for the final I'll present all 9. बट अदरवाइज आपने किए हैं तमाम पार्ट्स आपके जो ओवरली जी सर, किए डॉक्यूमेंट? हुए ओवरलीफ पे हैं, ऑब्वियसली रिफाइन होने वाले हैं। प्रॉब्लम 6, यस, आई थिंक, यस। राइट, क्योंकि हाँ, जैसे सर सज्जाद ने कहा था, एक दो हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं ना जो हमारे बड़े स्टार प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ख्याल से ये भी उनमें से एक है। सज्जाद साहब, ऐसे ही है? जी जी सर, शायद ये कुछ शायद उन एक क्लाउज में से है कि जो एक जैसे वो है, एक्सपेक्टेड है डायोफेन कि हर डायोफेंटीन। तरफ से आएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे इस पे। हाँ, मतलब एक जैसे वो डायोफेंटीन इक्वेशंस वाला है, वो हमारा उम्मीद है कि एक अच्छा सोल्यूशन होगा। और हाँ दूसरा ये जी जो जी, है। और चैलेंजिंग भी होगा इस वजह से कि क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे इसके ऊपर। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। शेयर, आप स्क्रीन शेयर अपना करें। Okay, sir. Sir, is it fine if I screen share PowerPoint? यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। यस यस, जो आपको कंफर्टेबल हो शेयर। देखें, तमाम लोगों ने पावर पॉइंट ही शेयर किया था। हाँ, वो ये था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस वक्त अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रेफर करना चाहें तो फिर आप वो शेयर कर सकती हैं, या अगर आपके पास कोई राइटिंग का है तरीका। सो बस आप स्टार्ट कर लें, क्योंकि सब लोग मौजूद हैं एक्सेप्ट अब्दुल्ला अरशद। Right. Okay, so I'm doing problem number 3, which is polynomial divisibility. Um,
So we can begin first of all by defining certain key terms. A polynomial is an algebraic expression consisting of variables and coefficients combined using addition, subtraction, multiplication operations. The degree is the highest power of the variable present with the polynomial, and a coefficient is the numerical factor attached to each term within a polynomial. Then, just to illustrate that, I have showed that a term in a polynomial is a product of a constant and a power of the variable. So, for example, if we're taking p of x, which is 3x squared minus 2x plus 5, and variable x, the degree is 2, and the coefficients are 3, minus 2, and 5 respectively. And obviously 3x squared, 2x, and 5 separately are the respective terms. Then, moving on to the concept of polynomial division, if you're given polynomials p of x and q of x, where q of x is not the zero polynomial, the division can be represented as follows. P of x is equal to d of x into q of x plus r of x, where we consider d of x as the coefficient polynomial, r of x is the remainder polynomial, q of x is the divisor polynomial, and lastly, p of x is the dividend polynomial. And we have to keep in mind that the degree of the remainder is always going to be less than the degree of the divisor. So again, to illustrate, if we take p of x is 3x cubed minus 2x squared plus 5x minus 7, and you divide it by q of x, which is x minus 2, the division would yield 3x squared plus 4x plus 3, obviously over x minus 2, you would get 5x minus 1 as the remainder. And that obviously has a degree less than the divisor, x minus 2. Then moving on to part 7, which I'm doing today because I was short of time, I'm going to focus on polynomials with rational coefficients in the end. So we have to consider the following aspects within the field, which would be modulo operation. So simply put, it's the remainder when you divide something. So a simple example would be 5 mod 3 is equal to 2, or 2 is the remainder when you divide 5 by 3. Progressing to polynomials, if we take p of x is 6x squared mod 7, and q of x is 2x raised to the power 4 plus 5x squared plus 2 mod 7, and you divide, you would get 5 mod 7, and that would mean that p of x does not divide q of x, sorry, here. So then the next aspect would be factorization. But here it will be more interesting to consider primarily prime polynomials. So this is actually a difficult thing to do. So I tried to do it in Z28. So I took x squared plus 23x plus 18. And interestingly, you got 4x squared plus 8x plus 23 into 7x squared plus 21x plus 2. Then you could also consider reducibility or irreducibility of polynomials in question. So simply, if you over Z4, x squared is, if you consider that it is reducible, you get x plus 0 whole bracket square and x plus 2 whole bracket square. And if you consider it as irreducible, you would get x squared plus 1. Then you could also potentially consider congruent relations, and simply put, it's two integers a and b are congruent mod n if a minus b is divisible by n. So the next part is polynomials with more than two variables. Here it will be important to distinguish between homogeneous and non-homogeneous polynomials, i.e. polynomials with non-zero terms or having the same degree. This helps us as their irreducible monomial nature can help simplify a rather tenuous process. Then you could also consider algebraic geometry, which will provide a way to connect algebraic equations expressed here as multivariate polynomials with geometric objects, allowing mathematicians to explore the interplay between algebraic and geometric structures. In essence, it's just a branch of mathematics that classically studies the zeros of multivariate polynomial for us to consider. These solutions can be points, curves, surfaces, or higher dimensional varieties in a finer projective space. Then, just to clarify the concept of algebraic curve in a more realistic 2D sense, if we just take a simple x squared plus y squared minus
equation, we will obviously consider the multivariate nature of the polynomial here, and that these solutions will conform to the algebraic set represented in a Cartesian plane. Then just an example of multivariate polynomial division, we would take Px y is equal to x plus y and qxy is equal to x squared plus 2x raised to the power 2y minus 2xy plus 2xy raised to the power 2 minus 3y raised to the power 2. And you would get x, and the dividend would be x plus 2xy minus 3y. And because the remainder here is 0, it shows that p of x, in fact, does completely divide q of x. Then for suggest and study other directions of research, it's a very lengthy, so I tried to narrow it down to a few important directions in particular. So we could pursue the investigation of different types of curves and the intersection through the assessment of unique polynomial families, like reciprocal polynomials where the coefficients are symmetric around the middle term. So x raised to the power 4 plus 2x raised to the power 3 minus 2x raised to the power 2 plus 2x plus 1. The coefficient, obviously, of x raised to the power 3, which is 2, corresponds to the coefficient of x raised to the power 2, and the constant term 1 is symmetric along the polynomial. Then you could also take the example of instantine polynomials. Here you have x raised to the power 3 minus 3x plus 1. Catering to this example in particular, it's just that the polynomial has a prime divisor common to all coefficients except the leading coefficient, which is x raised to the power 3. Here, obviously, the coefficient, because it's not present, it's 1. And this prime divisor squared, you're taking the prime divisor 3, so 3 squared is equal to 9, is also not a divisor of the constant term. Other than that, we could also keep in mind the intersection theory and possibly investigate the conditions. We could take into account symmetry, transformations in geometry of the specific triangle. And in terms of real world applications, we could also use this in cryptography for error detecting and code correcting algorithms. Then there you could also potentially take Diophantine equations into consideration. So this is just a example, because just to make it more clear, I can walk you through it. So if you take 5x plus 7y is equal to 29, and we want to find the integer solutions for x and y, we can rearrange it to get 5x is equal to 29 minus 7y. So in terms of the right-hand side, we have 29 minus 7y is divisible by 5. We can express it as 5k for some integer k. And now we have reduced the problem to finding solutions in integers for y. We can explore the possible values. So if we take y is equal to 1, we get 22, which is not divisible by 5. We take 2, we get 15, which is in fact divisible by 5. So we've come up with a suitable y value 2, and we can just plug it into the original location to find the x value, and therefore the equation 5x plus 7y is 29 has an integer solution at x is equal to 3 and y is equal to 2, proving that in fact you can use the polynomial divisibility within the broader field of the Diophantine equations. That is it from my side. I'll just stop sharing. ऑल राइट, नहीं अभी आप बेशक शेयरिंग ना बंद करें, क्योंकि अभी मैं फिर सब पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि वो क्वेश्चंस कुछ पूछें, और आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आपका जो ओवरलीफ का मेन डॉक्यूमेंट है उसको Yes. फिर आप रेफर कर सकती हैं. Right. So questions. Acha, I had a question. Can you move to slide 6, please? Sure. Here? Yes. मैंने पूछा था कि what, like आपने यहाँ लिख तो दिया कि reducibility or irreducibility of polynomials in question, but like Yeah. उसका जो example है, like This is you basically haven't really I think, explained कि like reducibility है क्या polynomials की. yeah, this is basically just a example. This is basically just a example. This is basically just a example. Like, This is basically just a example. This is basically just a example. This is basically just a example.
So you're asking me to include a definition of Yeah, that? yeah, and like, can you just Okay. like briefly explain, if you could, please? Okay. So, wait, do you want me to include it inside right now, the document? नहीं I नहीं, just मैं वैसे अभी पूछ रहा आप हूँ, करें, एक्सप्लेन तो करें ना आप शेरबानो, खुला एक्सप्लेन करें, फुल करें, जितना मैक्सिमम आप कर सकती हैं. okay. So फर्स्ट डिफाइन व्हाट can I इज open my document also? उधर चली जाएं जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपसे जब किसी ने मांगी है तो अब आपका फर्ज है कि आप डिटेल में बताएं उसको. Right. So डॉक्यूमेंट खोलना चाहती हैं वो खोल लें. रिड्यूसिबिलिटी से शुरू करें कि क्या होती है रिड्यूसिबिलिटी. okay, sir. I'll just open my document. प्लीज गो अहेड. Um, so टेक योर टाइम. sure. डॉक्यूमेंट आराम से तसल्ली से निकालें. टेक योर टाइम बट एक्सप्लेन इन डिटेल, थॉरो डिटेल. Right. I'll just write over here actually, because my document name is. So नहीं, my इफ यू टेक टाइम आप लें टाइम, मुझे उससे एतराज नहीं है, बट आपकी प्रेफरेंस है. ठीक है, आप इधर करना चाहती हैं इधर कर लें. so what I understand of reducibility is that a polynomial, so I'll just say it first and I'll write it. So if a polynomial f of x is reducible over f, we can factor it as g of x, h of x for some g of x. And then it has to be like of a strictly lower degree. And if f of x is not reducible, then we say that it's irreducible. I'll give an example also. Yeah, example is needed here. One second. I'll just open the document. आप बेशक अगर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करके अपना डॉक्यूमेंट तसल्ली से खोल के तो वापस स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर लें. Yeah, I'll do that. Can you see this? Yes, but these are the questions. आपका solution क्या है? No, wait. Um, can you see this? Yes. Now Okay. yes. I'll just walk you through it now. I haven't actually included that, so I'll just include it. So here, if we have to consider, let's say we consider a polynomial, I have to type x square. I'm just typing be here, x square minus 4. And so for it to be reducible, we have to first of all, start by factoring it. So we will get x minus 2 and
x plus 2. Right. So in this case, obviously it is reducible because it can be expressed as a product of two linear polynomials, each with a degree of 1. And another example could be a quadratic one, another quadratic polynomial that can be factored into, so we could get potentially x squared, let's say, wait, minus 5x plus 6. So yeah, so we can then factor this into, I think, x minus 3 and x plus 2, x minus 3 and x minus 2. So in this case, it is also reducible because it can be expressed in terms of like linear polynomials. And because, yeah, so if a polynomial can be expressed into lower degree polynomials, indicating that they're not like irreducible over a set of real numbers, I think. And then irreducible polynomials, on the other hand, cannot be factored in terms of into like non-constant polynomials with smaller degrees over, yeah. हाँ, मतलब मेरा सजेशन इसमें यही है कि आपके पास इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की भी एग्जांपल होनी चाहिए. Okay, sir. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक वो होंगे कि जिनका अगर क्वाड्रेटिक्स में भी हो सकते हैं, मतलब जिनका वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सोल्यूशन आता हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हो, तो देन वी वुड से कि वो दे आर irreducible क्योंकि they can be factored but they can't be factorized into मतलब वो real numbers में नहीं है. Yes. But ये Okay, चीज add it over here. so लेकिन आई थिंक अब्दुल्ला का सवाल सर और था. रिड्यूसिबिलिटी का जो अब्दुल्ला आपने सवाल पूछा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, वो इस वजह से कि जो हम पॉलिनोमियल्स जिस भी फील्ड के ऊपर कंसीडर कर रहे होंगे, या फील्ड के बजाय एक थोड़ा सा लूज स्ट्रक्चर है रिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे Z28 कंसीडर किया था शेरवान ने अपनी एग्जांपल में, तो Z28 जो है उसमें इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, यानी कि जिनको हम डिवाइड करवा सकते हैं और नहीं करवा सकते, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं. तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फील्ड, उसमें डिवीजन भी होती है. एक स्ट्रक्चर है रिंग जिसमें डिवीजन को हम नहीं देखते. फॉर एग्जांपल इंटीजर्स में हम डिवीजन की बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन रेशनल में हम डिवीजन की बात करते हैं, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड भी करवा सकते हैं. तो जो रेशनल नंबर्स का स्ट्रक्चर है वो फील्ड है, और जो इंटीजर्स का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग बनता है, ठीक है. और जो रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी है, हम उस रिंग के ऊपर बात करते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये इस रिंग में रिड्यूसिबल है या नहीं है, यानी कि उसके रूट्स अगर रिंग में से आते हैं तो हम उसको फैक्टर कर सकते हैं रिंग्स की फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है. मसलन x प्लस 1 और x माइनस 1 का प्रोडक्ट है, तो क्या बनता है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये रिड्यूसिबल है. अगर x स्क्वायर प्लस 1 को मैं कर दूं तो हो सकता है वो रिड्यूसिबल ना हो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर. Z2 के अंदर, Z2 का मतलब ये है कि ऐसी फील्ड जिसमें 0 और 1 है, यानी कि उसमें 0 या 1 हो सकता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें ये रिड्यूस हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ये रिड्यूस ना हो. अब x स्क्वायर प्लस 1 रियल नंबर के ऊपर रिड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें आयोटा चाहिए. x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा का फैक्टर जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 हमें देगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 है, ये रियल के ऊपर हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको हम कहेंगे इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मिल जाते हैं कि जिनको इस्तेमाल करके हम इस पॉलिनोमियल को लीनियर, यूजुअली लीनियर ही आखिरी जो है स्टेज है किसी पॉलिनोमियल को रिड्यूस करने का, लीनियर, यानी कि 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर को हम 2 को सेपरेट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे या रिड्यूस इसको हमने नहीं किया एसेंशियली, क्योंकि जो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई या डिवीजन करना है उसको हम रिड्यूसिबिलिटी में हम कंसीडर यूजुअली नहीं करते. तो आई एम सॉरी कि मैं अपना लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर सका हूँ, वरना मैं जो बातें बता रहा हूँ वो लिख के मैं बता रहा था.
नहीं, जी बिल्कुल मुझे किसी ख्याल है आपका, क्योंकि आज असल में सर सज्जाद की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए मैं आपने खुद ही जो है रिस्पॉन्ड किया, वरना हम तो सीखने का मौका मिलता है आपसे। लेकिन आज यही है कि आपको फिर नहीं ज़्यादा तकलीफ देंगे, लेकिन थैंक यू ये आपने। तबीयत तो शदीद खराब है। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और सुबह से मैं ऑफिस में नहीं गया, सारा दिन मैं लेटा रहा हूँ। ऐसी फैटीग है और फीवर है, फ्लू है, मुझे नहीं पता कल से क्या हुआ है। तो नहीं, नहीं, असल में मौसम भी आजकल एक तो चेंज हो रहा है, और प्लस ये मैं इन बच्चों को इसलिए भी थोड़ा जताना चाह रहा हूँ कि जो है ना, बड़े हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, जो ये इतनी फ्रीक्वेंट हमें काम करना पड़े, हमारे लिए भी ये काफ़ी प्रेशर हो जाता है। जी जी, और आपकी ये खातिर ही रेहाम कर और रहे हैं। दोनों दोनों जो आज के प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने मुझे बार बार मैसेज किया, लेकिन मैं मिनिमल रिस्पॉन्स ही दे सकता हूँ। हम कल परसों किसी भी दिन बैठ के डिटेल में आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज का क्योंकि शेड्यूल है तो आप जैसे आपके पास है काम उतना ही प्रेजेंट करें। तो मजीद जो कमी बेशी होगी वो हम आज नोट करेंगे, और आइंदा किसी दिन हम मीटिंग रख के तो इन इन मामलों को हम सेट करें। जी, 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 कोई और बिल्कुल। दोस्त क्वेश्चन? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाशिम, आपने लास्ट टाइम भी कुछ नहीं पूछा था। सर एज सच कोई कंफ्यूजन लगी नहीं मुझे क्वेश्चन में, सो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। नहीं, मैंने ये Also, I needed to ask, sir, can I say something? जी, जी, ये प्रॉब्लम एक्चुअली 9 पार्ट्स है, बहुत लंबा है। If someone else can also, इसने किसी ने किया हो, तो फिर if like someone can help me a bit. I व्हाई think नॉट। it's the longest. सब Yes. सुन लिया, और बिल्कुल बिल्कुल कोलैबोरेट करना चाहिए। देखें जी आप जी, लोग, जो भी कोलैबोरेट कर सकता है, ये एक टीम वर्क है, दिस इज नॉट इंडिविजुअल। तो ये तो है ही टीम वर्क, यही हम चाहते हैं कि आप सब कोलैबोरेट करें, और जो ऑथर्स में है वो कम से कम एक एक जो सॉल्यूशन है उसके दो दो तीन तीन ऑथर्स हो। और यही आज के जो मैथमेटिकल ट्रेंड है उसमें यही एक बहुत खूबसूरत जेस्चर इसी को समझा जाता है कि ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है और ग्रुप वर्क है। क्योंकि आज मैथमेटिक्स इतना वास्ट हो चुका है कि एक इंडिविजुअल बंदे को एक पेपर पब्लिश करवाना या उस लेवल की मैथमेटिक्स करना, वो तकरीबन जो है ना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली, बल्कि उससे भी ज्यादा स्पीड से मैथमेटिक्स ग्रो करता है। तो आई वुड हाईली इंकरेज कि किसी को भी किसी दूसरे प्रॉब्लम के अंदर कोई एडिशनल चीज है, कोई चीज कमी बेशी लगी है, तो सारे सॉल्यूशंस आप ग्रुप में है, ग्रुप में देख सकते हैं आप। तो कंट्रीब्यूट प्लीज लाजमी करें। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि सारा प्रेशर सजाद पे ना आए, आप लोग आपस में कर सकते हैं। और हाशिम, में यही मेरा पॉइंट है कि सवाल रेज करना बहुत अच्छी बात होती है। बात ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आया, बात ये है कि इससे जो स्पीकर है उसको भी मौका मिलता है अपने आप को। अब जैसे देखें, हमने रिड्यूसिबिलिटी का एक रेज किया, तो ये नहीं कि मुझे नहीं समझ आया या अब्दुल्ला को नहीं समझ आया। द पॉइंट इज कि स्पीकर का भी बेनिफिट होता है। तो सवाल जरूर करें, और रायान आप पूछें कुछ। सर ये वैसे मैंने ही पूछा था। अच्छा, सॉरी, फिर अब्दुल्ला पूछ लें। अच्छा, ये होमोजेनस नॉन होमोजेनस जो थी वो पूरे ये प्रॉब्लम पर अप्लाई हो रही थी, या सिर्फ वो वो एक कॉन्स्टेंट सिर्फ रिलेशन relation, पर? which is why I said कि it's one of the factors. ये पूरे प्रॉब्लम पे नहीं हो रहे। अच्छा, Yeah. क्योंकि उधर अगर जी। आप वो स्लाइड दिखाना चाहें, तो वो स्लाइड दिखा Yes. दें ताकि Okay, sir. कंटेक्स्ट कुछ मिल जाए। Okay, I'll have to stop share from here. या इधर से दिखा दें जो आपके डॉक्यूमेंट है ये। ये So I've said कि you have to make, मतलब कि you have to distinguish कि अगर homogeneous है या non homogeneous है, और अगर homogeneous है तो फिर आपके पास obviously एक unique aspect आ जाता है। अच्छा, आई वुड Okay. अगेन लाइक टू गो टू द बेसिक्स के होमोजेनस क्या है, नॉन होमोजेनस क्या है। I've said here that the polynomials with non-zero terms all having the same degree. So like, you want me to
मतलब एग्जाम्पल की मुझे कमी महसूस हो रही है। ठीक है, I'll put an example here. नहीं, कैन यू डू इट नाउ? Yes, wait a minute. Should I open the document and edit it there? जी जी, जैसे आपका कंफर्ट हो। If you have something like plus 2y, so this would be an example of homogeneous. Wait, there's y thing. X squared plus, yes, in like this would be an example of homogeneous polynomial. वाई, क्योंकि आप ये होमोजेनस की डेफिनेशन आप क्या कर रही हैं कि तमाम कोएफिशिएंट्स का क्या आप कह रही हैं? Sir, either I think better would be that the middle two जो आपके पास monomials हैं x y y x, if they could be combined into like you would get 2xy, right? तो इधर जो आपके पास सारे जो हैं जो इनके पास पावर 2 है, जी जी, like पावर जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है। और आप फिर उस तरह से आप नॉन होमोजेनियस की वो तो कंस्ट्रक्ट फिर आप करें। कुछ ले सकते हैं kind of, no? बट Like स्टिल मुझे थोड़ा सा इशू उस पे हो रहा है। चलें इसको भी, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इसको भी थोड़ा सा एक दफा सर्च करके देख लीजिएगा, एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स और एग्जांपल्स ऑफ नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स। क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप इसको लिखेंगी ना इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, कि राइट हैंड साइड पे आप जीरो रखेंगी, जी, उसमें शायद फिर कुछ इशू आए। तो आई वुड स्टिल रेकमेंड कि एग्जांपल्स आपके पास होनी चाहिए, 3-4 पॉलिनोमियल्स होमोजीनियस पता होने चाहिए, 3-4 पॉलिनोमियल्स नॉन होमोजीनियस। right. सो बाकी जो शहरबानों ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी लोग हैं, और अब्दुल्ला गोंदल नहीं हैं, रेहाम को भी चलें बता देंगे कि प्रॉब्लम 9 के वाकई काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो अगर कोई कंट्रीब्यूट उसमें जो है उन पार्ट्स में, तो ज़रूर आप शहरबानों को बताएं जिनमें आप हेल्प कर सकें। तो हाशिम, आपने सवाल ज़रूर करना है अभी, अगर शहरबानों की प्रेजेंटेशन से कोई आपके पास जहन में आ रहा है क्वेश्चन, वरना चलें जो रेहाम की प्रेजेंटेशन है उसमें आप कर लीजिएगा सवाल। ओके सर। अच्छा, मेरा भी एक सवाल था। मतलब मेरे एक दो आपकी प्रेजेंटेशन में दोबारा अगर आप प्रेजेंटेशन जरा दिखाएं, शेयर करनी पड़ेगा आपको। Yes, sir. मैं माइनर कुछ वो आपके टाइपोज वगैरह से मुझे था एतराज, और फिर यही Sir, मसला जो पहले भी है कि कुछ जगह मतलब यहाँ पावर पॉइंट में आप लोग शायद वो सबस्क्रिप्ट नहीं वो प्रॉपरली करते, तो sir, actually मैंने उसमें किया हुआ था in overleaf, but वहाँ मुझसे I didn't know how to screen share that, so I was thinking कि वो फिर full screen नहीं आ जाएगा। सही है। मतलब पावर पॉइंट पे भी इतना मुश्किल नहीं है। आपने शुरू में भी Z28 जहाँ लिखा हुआ था और ZN जहाँ लिखा हुआ था, वो काफी कंफ्यूजिंग था क्योंकि वो उसको सबस्क्रिप्ट वगैरह नहीं किया था, और कुछ जगह वो ब्रैकेट के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, तो इस तरह की चीजें मैं कुछ नोटिस कर रहा था। अच्छा, मुझे एक और जगह भी थोड़ा सा था जहां आपने मल्टीवेरिएट का टर्म यूज किया। इधर जी, इधर हाँ, spelling। इससे इससे पहले क्या आपने, मतलब मल्टीवेरिएट को आप किससे वैसे वेरिएट की भी स्पेलिंग गलत है, ये लेकिन चले
इसको कंट्रास्ट आप किससे करेंगे? मतलब मल्टीवेरिएट से पहले आपने कोई सिंगल वेरिएबल का केस लिया है? नहीं सर, इधर उन्होंने क्वेश्चन ही दिया था कि यू हैव टू पॉलिनोमियल्स विद मोर देन 2 वेरिएबल्स, क्वेश्चन 8। अच्छा, ये मैं सब लोगों को, ये पहले भी किसी ने इस तरह से ये जवाब दिए कि देखें क्वेश्चन उन्होंने दिया है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता कि चूंकि क्वेश्चन में ऐसा था। आप ये बताएं ना कि क्वेश्चन देने वाले ने क्या सोचा होगा। ओके। जी, ये मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ये पहले भी किसी ने ये कहा था कि जी ये गिवन था। नहीं, आप ये सोचें ना जिसने क्वेश्चन लिखा है उसने क्या सोचा होगा। आप उसके लेवल पर आ रहे हैं ना जब आप उसकी दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या था? पॉलिनॉमियल्स। इससे पहले सर देयर वाज कोएफिशिएंट्स। देखें ठीक है, इसमें ये सिंगल वेरिएबल था, ठीक है, पी ऑफ एक्स वाज अ सिंगल वेरिएबल पॉलिनॉमियल। और नहीं, पीछे जाएं, भी पीछे जाएं आप। पॉलिनॉमियल्स विद रैशनल कोएफिशिएंट, ठीक है, आगे आए, कंटिन्यूड आगे। पॉलिनॉमियल्स विद मोर देन 2 वेरिएबल्स, ओके, आगे आए। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। बहरहाल आप मेरा एतराज समझ गए ना कि आपने पॉलिनॉमियल्स विद मोर देन 2 वेरिएबल्स तो किए ही नहीं है पूरे जगह, आप तो 2 वेरिएबल्स पे ही हैं। नहीं, आप यू मीन यस। देखें एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हैं। राइट। तो ये चीज काफी सीरियस कंसर्न है कि मोर देन 2 वेरिएबल्स का मतलब ये कि 3 वेरिएबल्स का पॉलिनॉमियल होता। तो आपकी प्रेजेंटेशन में 3 वेरिएबल्स का कहीं पे भी नहीं है। तो वो या तो आपने उस क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया है। मुझे तो क्वेश्चन से यही लग रहा है कि आपको एक 3 वेरिएबल्स का भी कोई पॉलिनॉमियल कंसिडर करना पड़ेगा, जी स्क्वायर या जी समथिंग। ओके सर। देखें अगर आप अपनी पिछली हेडिंग देखें, सो इट इज वेरी ऑब्वियस, पॉलिनॉमियल्स विद मोर देन 2 वेरिएबल्स, बट वो नजर नहीं आ रहा मोर देन 2 वेरिएबल्स ना, राइट? तो ये मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करने में कुछ इशू हुआ है। आप अगर मुझे दिखाना चाहती हैं बेशक वो क्वेश्चंस वाला डॉक्यूमेंट दिखा दें, मैं स्टेटमेंट एक दफा देख लेता हूँ, वरना आप तसल्ली से देख लीजिएगा बाद में। सर वैसे आप समझ तो गई हैं ना कि मैं जो एतराज कर रहा हूँ। यस। And you agree that it is justified? No, yes, I definitely agree. I think somewhere in my head I just like uh eliminated the more part. I just focused on the 2 like term itself. हाँ, that could be one way out कि आप अगर नहीं हैंडल कर सकती more than 2 वेरिएबल्स को, then just keep it simple और आप 2 वेरिएबल्स तक I just limited eliminated the more, like in my head I think I just recognized it as like 2 variables only. So I will. हाँ नहीं, लेकिन आपकी वो बात से मुझे एक वो वैसे ही आ गया कि या द पुअर मैन सोल्यूशन इज कि वो फिर आप 3 वेरिएबल्स तक जाए ही ना, आप 2 पे ही रहें। तो बट ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाह रहे, वी वांट टू हैंडल एज डिफिकल्ट एज इट गेट्स। तो ये जरा फिर आप, ये काफी सीरियस कंसर्न है, दिस इज वेरी सीरियस। तो ये जरा फिर देख लीजिएगा आप। Okay, sir. एंड आई वुड रिपीट के अब चूंकि रेहाम भी हैं, तो अगर प्रॉब्लम 9 में जो भी शहरबानों को अगर कर सकें हेल्प, बहुत अच्छी बात है, एंड इट गोज फॉर ऑल ऑफ यू। रेहाम आप सुन रही हैं ना मुझे? जी सर, जी सर, मैं आपको। तो रेहाम चूंकि अब हमारा कैप्टन भी जो है वो डिसाइड हो चुकी हैं, तो बट अ वर्ड ऑफ वार्निंग के इमरान खान जैसे कैप्टन नहीं बनना। ऑफ कोर्स सर, नहीं सर।
इमरान खान जब Sir, I understand that I'm captain, but that doesn't mean that I have to work any less or anything. नहीं, मैं In इसकी fact, आपको that is, बताता हूँ yeah. कि जब अब हमारा वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, तो अब वो क्यों हमारा इंप्रेशन है, क्योंकि इमरान खान टेक्स सो मच क्रेडिट, जबकि वो अकेले इमरान खान ने नहीं जीता था। द होल टीम उस टाइम की जो थी, उस पूरी टीम ने जीता था। तो लेकिन इमरान खान इज वेरी ईगोसेंट्रिक, और वो तो आप लोग सारे एक टीम हैं, और इट्स नॉट जस्ट के शहरबानों को असिस्ट करने, बट आप सारे जो किसी को जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सो वो आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स पे कोलैबोरेट करें। एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग येस्टरडे, कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, आप जो इस वक्त हमारा यही टास्क है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को जितना रिफाइन कर सकते हैं, जितना रिफाइन कर सकते हैं, उसका आपको इन द लॉन्ग टर्म बहुत एडवांटेज होगा। सो यू नो, नॉलेज इज पावर। सो अच्छा अब्दुल्ला गोंदल, आप, मैं चाहता था कि आप सवाल करते, लेकिन आप आ जा रहे थे बीच में। जी सर, थोड़ा इश्यू था नेट का। तो आप करना चाहेंगे शहरबानों की प्रेजेंटेशन से कोई सवाल? नहीं सर, एक्चुअली मैं ऐसी पूरी सुन नहीं पाया, मैं हाँ, वो अपनी भाई के आपने पास था। सुनी नहीं। चलें अभी, लेकिन रेहाम की जो प्रेजेंटेशन है उसमें से हाशिम भी करेंगे सवाल, और अब्दुल्ला भी, गोंदल भी करेंगे, और ऑफ कोर्स बाकी जो प्रेजेंट हैं। सो रेहाम, ठीक है, आप फिर शेयर कर लें एंड यू कैन स्टार्ट। सर बस एक इशू आ रहा है, मेरा इंटरनेट इतना तेज नहीं चल रहा है कि प्रेजेंटेशन लोड हो पाए। मैं अपने नहीं, आईपैड पे कर आपकी रही हूँ आवाज सर। तो हमें बिल्कुल कॉन्टिन्यूस आ रही है। जो ओवरलीफ पे था, आ रही है? अच्छा ठीक है, मुझे कि आपकी करती जा रही है। सर सज्जाद ने ओवरलीफ पे जो मुझे लिंक भेजा था, मैंने उस पर पूरी प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में ही बनाया है। सर मैं बस एक चीज पहले से बताना चाह रही हूँ, अभी तक सम पूरा खत्म हो नहीं पाया है, क्योंकि मेरे पास बस 5 दिन थे एंड दिस वाज अ रियली रियली टफ सम। एंड मैं जितना कर पाई हूँ मैंने ऑनेस्टली किया। मैं कल रात 4 बजे तक बैठी थी, सम कर ही रही थी मैं, और जितना हो पाया वैसे मैंने कर दिया है। ओके बस रेहाम तो देख क्या ले, है? हमने जो है आपको कैप्टन बनाया है, तो कैप्टन या हैज सर आई नो, टू मोर। कैप्टन सर का आई नो, क्राइटेरिया ये है कि उसने जो है ज्यादा डबल काम करना है। अगर जो है बाकी लोग 100 sir, काम कर, I'm doing my best on this sum. Sir, I'm doing my best on this sum. I promise. I was just hoping that, after this session today, अच्छा everyone चले, would आप just help स्टार्ट तो me करें find. ना। Yeah, so I'll just share my screen. Sir, can you see my screen? जी बिल्कुल, आप स्टार्ट करें, और वही 10 मिनट्स में वाइंड अप करें। Okay. Sir, so problem 1 says that part 1 says that we have to prove k is prime and that all coefficients of f akx are divisible by आपकी k. शेयरिंग प्रॉपर Right? नहीं आ रही रेहाम। Oh, ये जूम जूम किया हुआ है या कुछ किया हुआ है? इसको नहीं, थोड़ा ये सा ऐसे छोटा आना। करें ताकि Is this fine? कैन यू पिंच एंड जूम लाइक दिस? मैं बहुत छोटा, मैं नॉर्मल रखा हुआ है, I don't know. Wait. अच्छा ये सर, मेरे पास तो ये आ रही है सही। असल में वो कह रही है ना कि उनका इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। अच्छा ओके ओके, देन इट मस्ट बी फाइन। Okay. So part 1 ये कह रहा था कि we have to determine that this equation that they've given fax, so we have to prove that k is prime and that all coefficients are also divisible by k. So what we did that was कि पहले we would try to make this equation into a polynomial. So this is a really famous equation, which is that determinant of a plus b equals determinant a plus determinant b plus trace a trace b minus trace ab, where a and b are n by n square matrices. Okay, basically trace की just definition में बता दूँ, it's the diagonal in the matrices and determinant is the AD minus BC जो होता है negative. Okay, so further हम simplification ये इस्तेमाल करेंगे and these are the terms that we're going to use. So determinant CA would be C to the power of n determinant A. These are all determined things. They're very known formulas and everything. So I've used them to help me with this sum. And C is a scalar constant, just remember with that. So now
we're going to simplify this into a polynomial so that it's easier to solve. So next, what I've done is that since we have the equation here, that determinant of AK minus xi, so the I stands for identity matrix, and we started plugging it in for the formula. So मैंने उसको डाल दिया है, and then I've minused it from the determinant of A xi, right? And when we simplify it as seen by these steps, it'll come to trace AK minus trace A bracket 1 minus nx plus determinant of AK minus determinant of A. And this is a linear polynomial, right? Because it's the xk term and it's a constant. So that means the only thing we really need to consider right now, because we've been told in the question that we need to simplify and we need to check that the coefficient of x is divisible by k, right? So the only thing we're concerned with now is the coefficient. And the coefficient is trace AK minus trace A bracket 1 minus n. So now that we have that, we'll be using modular congruency to solve it, right? So we have to prove it that k is prime. So trace A of k minus trace A is congruent to 0, and then trace AK is congruent to trace A mod k इस्तेमाल करके. And it turns out that this part from now on has already been proven by VI Arnold. So the proof is complete. I have given a link of this research paper at the end of this document so that some have it. Now I haven't done part 2, but I've done part 3, right? Part 3 is the question says that the factorization of k is this formula that they've written. This, by the way, the symbol that they've given, this means some product of numbers, right? So we have to break it into factorize it into primes. So we've been given this gk equals to half of this and hk equals to half of this. And we need to find out that for all coefficients of a and k, are they all divisible by k? And we need to give either a proof or a counterexample. So one thing that I found out while researching on this topic is that HK's relation is related, this formula that's given is actually equals to Euler's torsion function. So one of the definitions is this. And we know that looking at the definition, it is clear that HK is phi k divided by 2. And this is useful because now that we have like determinant AK minus 2hk minus x matrix equals to determinant AK minus phi k minus x identity matrix. So we have this now and we will be using this later, right? This was our formula that we have. So now the same simplification method we used in part 1, which was using this formula, right? And doing the same steps to arrive at a linear polynomial. So we'll do that again. And this time we'll get like the same steps and we'll instead, now the powers will change. Last time it was AK and A, but now it's AK and AK minus phi k, right? So now note that, so important thing to note that in this case, n equals to 2, but it is left as it is since it's not necessary for the solution, okay? Now we know that if k is this to trace of AK and minus trace of AK minus phi k, for all valid k, then the statement in the question is true, which was that k is divisible for all coefficients, right? Now we'll write it once again as a modular congruency. So trace AK is congruent to trace AK minus phi k of mod k. But this time it's important to note that the congruency does not hold true like it did in part 1. Example of this would be if we use the setting of A equals to the matrix, the rotational matrix of 0, 1, minus 1, 0, and you would take K as 6. When you substitute these values, the result would be 4 is congruent to 2 mod 6, which is not true. And with this counter example, the statement made right at the start is false. So while till here it would be valid, congruency mein we've proved it to be wrong. Next for part B, it says that for this equation, where instead we're now using gk, the phi is gone now, so it's a to the power of gk plus hk, and then the other one's a to the power of gk minus hk. So is it divisible by k? So now starting with that, we'll try it now, and this time we'll use a characteristic polynomial. Basically, characteristic polynomial, every matrix has its own characteristic polynomial, right? So this is like a set formula, and by a 2 by 2 matrix, it's defined to be P A z equals to z square minus z trace A plus determinant of A. And now that we're looking at the question directly,
we can reduce the problem in a similar way. So the same way we did at the start. The main thing in this sum is that the simplification made right at the start is really important for the rest of the parts because it clears way and it makes it easy to simplify everything else. So the power of gk plus hk is congruent to trace a to the power of gk minus hk mod k. So now this part, now that we reached here, we have to either prove or give a counter example and disprove. So now what we'll do is we'll use phi k equals to gk plus hk, right? Which would be half of phi k plus this quotient. We now know that we now have that a to the power of gk plus hk is equal to a to the power of phi k, and a to the power of gk minus hk is equals to a to the power of phi k. No, that's not a phi. That symbol minus k minus phi k, right? Because we've used combine the coefficients as proven in two characteristic polynomials of these will be congruent to modulo k. So we have z square minus z trace ak plus determinant of ak, and which is congruent to z square minus z trace ak minus phi k plus determinant of ak minus phi k and mod k. Now there's z square on each side, so we'll just cut that out, right? And now we'll substitute z as 0. So determinant a of that and determinant a of k minus phi k will also be gone, right? And since these are both, that'll be the only thing left, right? So since these are both congruent, they'll also be cancelled out. And then we'll substitute z as -1 as a final step and get this, which is trace ak is congruent to trace ak minus phi k mod k. And therefore, we've proven the statement to be true. And now, once again, we need to prove or disprove this statement. So we know that trace of ak is congruent to trace of ak minus 5k mod k. And now, a is this time a 3 by 3 matrix. So the setting of a would this time be 1 0 0 0 0 minus 1 0 1 0. And we'll use k is equals to 6 like we did in part A. And once again, we'll arrive at a counter example and an invalid result, which is 5 is congruent to, which is not congruent to 3 mod 6. And once again, since we found a counter example, we've disproved the statement. And these are the references for the references and the links that I've given for the website, for the proofs. Yeah, thank you. I think that's all. Right. So questions? Okay, so can you move to the like the start where you mentioned three known equations? Yeah, this. Yeah. So I was curious, like you didn't mention how these three known equations are linked to this particular problem. So can you Oh, like briefly explain? yeah, of course. Basically, what I've done was that when I was talking about the simplification here, I just said it would be simplified using those, but my bad. Basically, determinant of I would be n, right, to the power of n. What we've done is use these. So trace of CA, so then that will become the coefficient, right? इसको इस तरह से हमने इस्तेमाल किया है ताकि when we're simplifying this here and we have x and I, so at the end of it we didn't have any I, right? Because determinant of an identity matrix is just ultimately 1. तो वो minus x to the power of n हो गया, right? And ये बिल्कुल simplify करके इस तरह से लिख दिया है. So we've used those equations to simplify the next part to reach the polynomial. Yeah. Right. Okay, next question. I have a question. Yeah. In slide number 15 आपने वो z is equal to -1 plug in की है, वो कहाँ से है? Z की value -1. Basically, I think we're just like basically doing trial and error to get a simple equation that we can prove to be true, right? Because there's so many different variables and constants and coefficients that आखिर में बिल्कुल पहुंचने के लिए to find the coefficient to reduce k, we'll be using different coefficients and values of z, right? So the simple one सबसे पहले इस्तेमाल कर ली 0 ताकि z square कट हो गया and z के साथ जो भी trace थे तो वो भी कट हो गए and अब determinant रह गया, right? So then we'll just -1 वहाँ पे plug in हो जाएगा and then if you use -1 it'll become much more easier to reduce and then therefore you'll get the equation trace a of this ak
is going to trace ak minus 5k 1k, right? तो फिर ये इस तरह से, रेहाम that's नहीं, why I think it's just मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए क्वेश्चंस का मकसद ये है ना कि आपको वो जगह नजर आए जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इट इज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर के हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि लुक इनटू इट, और इसको Okay, फिर आज तो सर सज्जाद थोड़े ही अनवेल, तो लेकिन आप कल फिर उनसे भी पूछें, लेकिन खुद भी सर्च करें। देयर of मस्ट course. बी अ डीपर रीजन, कोई डीपर रीजन होगा, ऐसे नहीं कि 0 ट्राई कर लिया -1 ट्राई कर लिया। देयर Okay, मस्ट sir. बी अ डीपर थिंग, और वो ट्राई टू उसको उस तक पहुंचने की कोशिश करें। देयर मस्ट बी समथिंग डीपर। Got it, sir. ये तो I'll find the answer to फैक्ट्री this. नहीं Yeah, है yeah. Don't कि worry, sir. हिट एंड ट्रायल कर लिया। और रेहान आपने ट्रेस के लिए ये इक्वेशंस डिराइव किए हैं, मैंने आपसे कहा था डिटरमिनेंट के लिए भी होंगे क्योंकि वो भी तो कोएफिशिएंट है। जी सर, वो मुझे रसम लिया है या मेरे स्किप हो गया मेरे से? आपने डिटरमिनेंट हाँ के लिए ये रिलेशंस किए थे या अभी नहीं किए? ये जो प्रूफ्स है आपने ट्रेस के लिए तो कर दिए, जी डिटरमिनेंट के लिए भी किए हैं? वो नहीं शायद मेरे स्किप सर, कहीं हो गया, सर आई डोंट थिंक मैंने डिटरमिन के लिए किए, मैं क्योंकि डिटरमिन के कोफिशिएंट्स लिए का, हाँ कोफिशिएंट्स का मतलब है ना कि x का कोफिशिएंट कांस्टेंट हाँ टर्म, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सारे। अब इसमें x स्क्वायर तो सिरे से बचता नहीं है, तो ओके हमारे सर पास जैसे आपने प्रूव किया कि लीनियर है, तो दो इसमें कोफिशिएंट्स होंगे x और कांस्टेंट। सो बेसिकली मैंने ओके आपको ये सर बताया था कि x का कोफिशिएंट है जी और जो कांस्टेंट है वो भी बेसिकली x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। जी सो सर लेकिन इजी है, डिटरमिनेंट के लिए वो इजी है जो ट्रेस के लिए आपने प्रूव किया है। ओके सर, मैं Did this. डिटरमिन को भी प्रूव कर लूंगी इसके बाद। For sake of completion, so you या have to, या सर ऑफ कोर्स। to do this. तो नेक्स्ट क्वेश्चन शहरबानो। I also had वो अब्दुल्ला वाला कि उसने z is equal to -1 क्यों डाला है, बट वो उसने कभी कह दिया। अच्छा चलें ठीक है, वो आंसर हो गया। जी और अच्छा रायान जा चुके हैं मीटिंग से, मोहम्मद अब्दुल्ला पूछ चुके हैं, ठीक है। मैंने अभी नहीं पूछा। मैंने पूछना था ये जो है si = 1 वाला, तब एक्चुअली मैं लैग हो गया था। ये क्या है, जैसे एक्सप्लेनेशन अगर। बेसिकली इसका रिलेशन जो है इन्होंने हमें ये फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया था, और जब ये जो सिंबल है जो पाई जैसा दिखता है, नॉट रियली द बिग हाँ, थिंग, दैट्स बेसिकली यू नो हाउ समेशन का हमारे पास सिग्मा का नोटेशन होता है, दैट्स समेशन ऑफ ऑल टर्म्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, राइट? तो देन वही अच्छा चीजें लिमिट्स है, सो I1 एंड देन s उसकी टॉप लिमिट एंड देन दिस इज द वन यू प्लग इट इन, तो प्रोडक्ट ऑफ सम एंड इट्स इक्वल टू Euler's torsion, which is hk, right? So this is hk and it's equal to Euler's torsion. So when you simplify it, you get the answer. Like I've simplified it throughout. अच्छा Yeah. अच्छा एक तो रेहाम ये कि ये सिंबल जो है ये कैपिटल पाई है। नहीं सर, मैं इसका प्रॉपर नाम ढूंढती हूँ, मैं इसका प्रॉपर नाम ढूंढती हूँ क्योंकि मैंने नहीं, इसके बाद में देख लीजिएगा। जी मेरे ख्याल से आपको कैपिटल पाई ही इसका नाम मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं ये बोल रही थी पाई जी जैसे दिखता ये है है कैपिटल तो पाई, पाई। लेकिन लेटेक्स पे ये स्लैश प्रोड PROD प्रोडक्ट अच्छा के प्लॉट में आंसर है। आता है। जी जी, ये बैक स्लैश जिस तरह सम हम लिखते हैं तो वो सिग्मा आ जाता है, तो अच्छा ये बैक सही है, स्लैश प्रोड प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि सिग्मा तो वो होता है ना, कैपिटल सिग्मा या वो वाला होता है, समेशन वाला होता है, और स्मॉल सिग्मा या डिफरेंट होता है। या सर दैट्स व्हाई, सो मुझे अच्छा पता आप है जी स्लाइड 12 पे जाएं जरा। 12 yes sir. आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा और आप डिटेल में ये समझाएं कि जब आप कह रही हैं कि 4 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 6, Yeah. तो असल में आपने वो अटेंड नहीं किया जब मैं शहरबानों से क्वेश्चन कर रहा था। तो आप क्वेश्चन का आंसर कोशिश करें कि एज्यूम करें कि मुझे मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं पता जो पूछ रहा है, तो जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें। सो थोड़ा सा Oh, मॉड्यूलर अरिथमेटिक को भी रिकॉल करवा दें, एंड देन
आंसर के why is 4 is not congruent to 2. Okay. Okay. Sorry, sir, my गाड़ी में थी, मैं बस एक सेकंड निकल रही हूँ. Sir, basically modular congruency में ये होता है कि you're using terms and you're finding the remainder, right? तो जो remainder बचता है उसको आप इस्तेमाल करते हो. So like mod 3 mod 3 would be like I think it would be 1, right? तो basically इस तरह से modular congruency होती है. Sir, मैंने असली में इस presentation में details थोड़ी कम 3 रखी mod थी. 3 would be 0 हो रहे हैं. Yeah, sir, my bad. 3 0. क्योंकि 3 mod 3 divided by 3 remainder is would be 0. have 0 remainder. Yeah. So like that way. So there's a अच्छा 6 रेहाम, mod. मैं इसका बहुत जो है ना अच्छा सा आंसर चाहता हूँ. अगर आप कहीं आराम से बैठ के सेटल होना चाहती हैं, वी विल वेट. लेकिन Yeah, okay. Thank you, sir. मैं बस आप मुझे बस 2 minutes दे दें, मैं घर में चली जाऊँ बस 1 second. I'm really really sorry. नहीं नहीं, आप लेकिन ठीक है, जाएं आप. Okay, sir, बस 2 minutes. Okay, sir. I'm back. Okay. So अच्छा, basically, मैं बता दूं कि मैंने मतलब आपसे पहले भी शहरबानों को यही कहा था कि आंसर एक तो डिटेल में करना है, और बेशक अपना अगर आपने ओवरलीफ का डॉक्यूमेंट यूज करना है उसको यूज करें, या कोई राइटिंग आपके पास है उसको यूज करें, लेकिन डिटेल में बताएं. और okay, sir. मैं आपको अभी वैसे जितना मैं अपनी बेस्ट नॉलेज से मॉड्यूल कम्युनिटी समझा सकती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ. नहीं, Basically, आप लिख सकती हैं. लिखने का आपके पास है कुछ तरीका? नहीं. नहीं सर, इट्स फाइन, मैं कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं है. Basically, modular congruency में ये होता है कि when there's numbers, where numbers are wrapping around a certain value, a modulus, right? So you're approaching a value, and in modular congruency, the main thing is कि आपको remainder मिलता है, and if the remainder is congruent to your number, right? So 4 is not equal to 2 mod 6. Basically, 2 mod 6 का जो remainder है 2 mod 6 is okay. So I think मुझे इस पे आई थिंक कि आपको लिखना पड़ेगा. आप थोड़ा कोशिश करें किसी तरह. अगर देखें, so I टू think को मुझे डिवाइड कर, या तो 2 को डिवाइड करिए अब 6 से. yeah, sir, maybe okay. I'll try that. Okay. So can you see my screen? Yes, yes, why not? Okay. So 2 wait, oh my bad. 6 divided. आप 2 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं. Put 2 Yeah. inside. Yeah. Okay. 6 So लिखे. 6 times 0 is 0. Okay. yeah. So 0 यहाँ पे हो गया, and then just 6. So at the end of the day, the remainder यहाँ पे जो आएगा, that would be 2. And वहाँ पे जो था दूसरी तरफ वो 4 था, and 4 is not equal to 2, right? So उसकी वजह से ये हमने prove कर दिया modular congruency में. The main thing in modular congruency is finding the remainder, right? अगर आपके पास remainder जो है उस पे equal नहीं आ रहा, तो then वो statement prove नहीं हो सकता. For example, 6 mod 3 करते हैं, right? So उसमें 3 divided by 6 का जो remainder आता, this is what you're doing when you're saying mod 3, you're taking 3 here and taking it as 0, right? So 3 equals to 0 mod 3, right? Because that's
basically what it means. एक second. 3 mod 6 mod 3 equals to 0. That's what you mean. And this actually is equal to each other, right? जब But आप when we're काट काट के कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या लिखा है, इरेज कर देना. so 6 mod 3 is congruent. Wait, it's congruent to 0, right? That would make sense because like I just said, यहाँ पे जो breaking की थी उससे prove हो गया. पर जब हमने यहाँ पे ये किया तो ये कह रहे हैं कि मॉड के बाद जो नंबर आ रहा है उससे डिवाइड करना है. basically sir, तो या सर बेसिकली जैसे अगर हम 4 और 2 mod जैसे हमने कहा कि 2 mod 6 कर रहे थे, तो जब हमने यहाँ पे किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा था. So 4 is not equal to 2, right? But जब हम एक 6 थोड़ी mod सी 3 करते हैं. आसान एग्जांपल पहले कंसिडर करते हैं. Okay sir. मॉड 5 करते हैं और 20 मॉड 5 करते हैं. Okay यानी sir. सॉरी 21 मॉड 5 करते हैं. Okay sir. Yeah. 21 mod 5. Okay. So we would do 5 and 21. And this would be 4, 20 equals to 1. So 21 mod 5 equals to 1, right? So that is, कॉन्ग्रुएंट में हम क्या लिखेंगे? इन कॉन्ग्रुएंट नोटेशन हम लिखेंगे we जो would write आपने लिखा. this way, right? जी जी ठीक है. Yeah. नहीं अच्छा इस तरह लिखेंगे. हाँ सही कह रही हैं आप. Yeah. ठीक है. Yeah, right. So not this. Yeah. So in this जैसे हमने इसमें कहा दोनों कि ये वेज में लिख सकते हैं. क्या चीज? मतलब मैं इसलिए ये इशू रेज कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा. मतलब 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या 1 राइट हैंड साइड पे होगा. मतलब सर? मतलब दो हैंड साइड्स है ना, एक राइट जी हैंड सर, साइड जी सर. लेफ्ट साइड्स है. तो 21 कौन सी साइड पे होगा? क्योंकि आपने देखें दो वेज में लिखा है इसको. विच वन इज द करेक्ट वे? Sir, that's what I'm. Yeah. Yeah, देखें sir. Basically, तो इसमें कोई yeah, ऐसी sir. बात नहीं. अगर हम कंफ्यूज्ड हैं तो वो कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, और इसलिए जी मैं ये sir. रेज किया इशू. और मे बी अगर सर सजाद अगर हमें थोड़ा कर दें हेल्प. Yeah, sir. Because I understand modular जी जी congruent is a हम आपने जो concept, but 21 करके 21 mod 5 लिखा है वो प्रॉपर नोटेशन है, सही नोटेशन. okay, sir. This one, right? जो above Above, right? अच्छा ठीक है. 21 This. is calculated to 1. Yes. Yes, the correct So notation. then, अच्छा इसमें ये है कि 21 यूज करे या 1 करे कोई डिफरेंस नहीं है एज सच. लेकिन उसमें एक और चीज आती है जो जिसको हम रिड्यूस्ड sir, that's what I'm भूल गया thinking है. because if, दिस कॉल्ड yeah, रिड्यूस्ड सेट. लाइक आप 21 2 3 4 आप कहीं से भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके तो उनको आप मोड 5 पे ले सकते हैं. तो देयर इज yeah. Sir, what I'm checking is they're both लेकिन जो in the रिड्यूस सेट में हम equivalence लिखते हैं ना class. तो यस बोथ आर सेम क्लास. तो जो रिड्यूस्ड सेट होता है जो उसका प्रॉपर वर्ड भूल गया, लेकिन रिड्यूस्ड सेट के अंदर आप करते हैं कि रिमाइंडर शुड बी लेस देन 5. यानी कि 6 है तो उसको आपने 1 लिखेंगे तभी वो रिड्यूस कंसीडर होगा, अदरवाइज वो हमारे रिड्यूस सेट में नहीं है. जी sir. और एसेंशियली इसका गोल ये है कि इजी अरिथमेटिक एंड ऑल दैट स्टफ. यानी कि हम 1001 भी ले सकते हैं, उससे कोई Yeah, खास डिफरेंस नहीं क्रिएट होता. 21 ले 1 ले या 1001 yeah. या कोई भी 5 का Basic, मल्टीपल प्लस 1 ले ले, सो इट्स सेम. yeah. So I तो think मेरा both सवाल these था will रेहा, be. वो मुझे आप सॉरी किसी और का सवाल है या मैं सवाल पूछूं? मुझे एक चीज जो सर बिल्कुल थोड़ा आप सा डिस्टर्ब कर रही थी रेहा, वो ये कि आपने जो गो बैक टू द स्लाइड्स Yeah, sir. यहाँ पे This one. 6 बोर्ड वाला काम आपने किया है. 6 mod वाला एक second अच्छा I ये think. इस पे जो पूरी जो सूडो प्राइम्स चल रहा है
तो इस पे एक्सपेक्टेशन हमारी ये होगी कि 6 is not prime but it is somehow behaving as a prime in your test. लेकिन तभी वो सूडो प्राइम कहलाएगा, जो कि प्राइम है नहीं, लेकिन हमारे टेस्ट के अंदर उसका प्राइम प्राइमरी टेस्ट में वो पॉजिटिव शो करता है, यानी कि शोज टू बी प्राइम, सो उसको हम Yeah, सूडो प्राइम कहते हैं। yeah, sir. अच्छा, यहाँ पे आपने 6 को क्यों चेक किया? हमें तो प्राइम्स टेस्ट करने थे ना, 6 तो प्राइम है ही नहीं। क्या ये So I, रिलेशन हमें प्राइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है? यार कि वो शुरू में जो सबसे पहले क्वेश्चन में जब वो कर रहे हैं सारा काम, तो yeah, sir. उसमें तो वो ये प्रूव कर रहा है कि जो भी बोर्ड जीरो में, Hmm. सॉरी, जो भी रिड्यूस के में अगर जीरो देता है, इसका मतलब के प्राइम है, ठीक है। और आपने 6 को एग्जांपल लिया है और 6 को ये बताया कि 6 इसको रिड्यूस टू 4 and 2 which is not 0. This implies that 6 is not prime because what you are doing is you are testing for k to be prime or not. अगर वो 0 दोनों साइडों पे देता है तो वो प्राइम होगा हमारे टेस्ट के हिसाब से। तो आपने 6 क्यों चूज किया? और ये मुझे इस जो पूरे स्लाइड की है ना, दोबारा आप थोड़ी सी वजाहत कर दे ताकि क्लियर हो जाए। Okay, आप sir. इससे ये नतीजा अखज कर सकती है कि 6 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट्स नॉट गिविंग 0। हो सकता है यही रिलेशन अगर आप 5 के लिए चेक करें या 7 के लिए चेक करें, हो सकता है दोनों साइडों पे 0 दे, क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम्स है। Sir, my main idea was कि हमें कोई भी जो है एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना था, and like we said कि pseudo prime भी हम ले सकते हैं इसमें, right? And 6 is a pseudo prime. So सॉरी technically, 6 is not a pseudo prime. The first oh Carmichael wait, number is sir, I 341 और think जो आपको wait, मैंने लास्ट टाइम my bad. बताया था, Sir, I just 6 is remembered. not a prime Yeah. pseudo So prime. I just remembered in part 3A that it says that it's for all k. K doesn't have to be prime in this one. So that's why हमने 6 लिया था, because it said divisible by k and it didn't say कि k जो है उसे prime होना चाहिए or anything like that. That's why we took k to be 6 because we had to find any मेरा kind of ख्याल है कि जो सूडो प्राइम्स वाली जो पहले जो डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वहां पे उसने लेट के एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और प्रॉब्लम 1 में वो कह रहा है कि के इज प्राइम, ठीक है। और प्रॉब्लम 3 में वो कह रहा है ठीक है, डिविजिबल बाय के yeah, एंड के ऑल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये exactly. So के में that कोई प्राइमेलिटी की कंडीशन वो नहीं दे रहा, लेकिन जो मुझे yeah, लग रहा है कि इसमें आप फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना, बिकॉज आई सस्पेक्ट दैट दिस इज वन ऑफ द मॉडिफाइड जो ऑयलर सॉरी फेजमान टेस्ट फॉर प्राइमेलिटी है, ये उसकी जी कोई sir. मॉडिफिकेशन है। हो सकता है ये कोई ऐसी होगी जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी बेस्ट हो या एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिदम हो, या कुछ ऐसा हो। आई Okay. सस्पेक्ट कि ये के जो है प्राइम होगा तो ये करेगा डिवाइड, अदरवाइज नहीं करेगा, लेकिन ये Yeah, but sir, it बाई के। probably will divide if with other k values. But the main thing was k, we have to find if it's true for all k values, right? तो फिर कोई भी काउंटर एग्जांपल ढूंढ ले तो फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे k prime हो के नहीं हो, it's for all k, and if it doesn't qualify for all k, then it's obviously a counter example, right? So then the first thing like I could find through everything was like k equals to 6 liya, and it's not true. So then Then immediately you you, come with a counter example. okay, what I recommend you is do this for Yeah. 2 3 4 5 6 7 8, ये Okay, sir. 6 7 नंबर्स के लिए आप इसको करें और देखें Okay, कि ये sir. प्राइम्स के लिए 0 होता है या नहीं होता। जो पैटर्न चल रहा है ना प्रॉब्लम्स का, उसमें वो के को एक दो जगह तो उसने मेंशन किया है कि ये सूडो प्राइम है, जैसे प्रॉब्लम 1 में और प्रॉब्लम 2 में, लेकिन 3 में वो डिविजिबल बाय के उसने कह दिया है। सो अब इससे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी जनरेट होती है कि कैसे प्राइम होगा या नहीं होगा। Okay. So sir, मैं k की values की और prime की और non prime की जो है ऐसे और वर्किंग दिखा दूंगी कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ठीक।
हाँ, जी सर। अगर आपके अगर प्राइम्स के लिए ये 0 देता है, then you can also claim that this is a test for primality. Oh, yeah, okay, sir, I could do that. Okay, so that's why we have to test. Sir, जो आपने do you think we could, प्रॉब्लम if we're saying नंबर that this was a 4 के लिए test for जो primality, yeah, for part 5 जो हम test of primality ढूंढ रहे थे, could we use this then? yes, Oh, ये चीटिंग नहीं होगा कि आप प्रॉब्लम 3 को प्रॉब्लम 5 में उठ के ही मुंह पे मारे. so I don't think it's cheating. Sir, technically, I think all the parts are linked to each other, right? मैंने जो पार्ट 1 में सिंप्लीफिकेशन की थी उसको मैंने इतनी बार इस्तेमाल किया थ्रू आउट द सम क्योंकि बार बार आंसर आ जाता था. तो अगर पार्ट 3 से हमें प्राइमरी टेस्ट मिल जाते तो फिर हम उसे पार्ट 5 में मैट्रिसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि मुझे और कोई रिसर्च मिल ही नहीं रही है कि जो कोई और आपने प्राइमरी टेस्ट है जो फॉर्मेट से आपने लिंक नहीं लुकास है. सॉरी आपने जी बर्सीन सर. नंबर्स के साथ जो मैट्रिसेस वाला पेपर शेयर किया था, जी सर. वो अभी तक मैंने जब पेपर ऑन किया तो अभी तक वो ओपन है. उसमें हो सकता है कोई चीज मिल जाए, बिकॉज उसमें एक सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं एस के नाम से, और फिर या देखते हैं कि कौन सा प्राइम बर्सीन नंबर उसको डिवाइड करता है और कौन सा बोर्ड 0 देता है. सर आई बिकॉज आई वाज हाईली गोइंग थ्रू सस्पेक्ट कि दैट. वहां से कोई या चीज मैट्रिसेस की फॉर्म में निकल सकती है, क्योंकि वो भी एक ऐसा रिलेशन है जो दो एक कांस्टेंट और एक प्रीवियस टर्म के बेस पे एक सीक्वेंस जनरेट करता है. या So सर similar आई to वाज. the हाँ. matrix of Fibonacci numbers. I was trying to find a prime number test with matrices, and that was the only article I could find. But the notation was so dense with every word and every definition. को बार check करी थी, and I was unable to do it. And then I was like, sir से जाके can maybe help then he can. वरना फिर मैं कुछ और ढूंढने की कोशिश I करती couldn't हूँ. go beyond first page. Literally, Yeah, sir. Sir ऐसी was स्क्रीन की तरफ really, देखता हूँ तो really. मेरे जो आंसू अभी आंसू निकल रहे हैं मेरे Yeah, स्क्रीन की sir, तरफ it देखते. was really I bad. mean, It was very really terrible dead. condition. We will work on it. We will work on Yeah, it. sir. So we have 3 more days, so I'm sure test for primality अगर इस वाले को मैं टेस्ट करती हूँ कि हो सकता है कि नहीं. अच्छा, सिमिलरली स्लाइड 16 पे आप जाएं Yes, sir. और यही सिमिलर है वहां पे भी. सो नाउ Yeah. आई थिंक कि अब 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3, क्योंकि जब आप 6 Yeah. 5 डिवाइडेड What बाय you 6 do? करेंगे, रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा आपके पास. अच्छा Yeah. चलें, अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मुझे थोड़ा सा समझा दें कि आ, ये जो आपने किया सेटिंग ए, और वो वही वाला जो अभी सर सजाद बात कर रहे हैं, मुझे वही है कि काफी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ये क्यों स्पेसिफिक ए क्यों ये एज्यूम किया. So that is a good question. Hmm. So I'll have to think about this one. Why I chose 3 by 3. This matrix. ठीक है, मतलब ये सवालों Hmm. का बिल्कुल ये Yeah. बहुत So वैलिड क्वेश्चंस I'm हैं. yeah. और So I'm making a list of all the questions that I've been asked so that I ये can get the answer to them for next time. हाँ, मतलब देखें ना, फिर एक्चुअल टूर्नामेंट में इस तरह का साइलेंस हो जाए तो वो Yeah, दैट sir. मीन्स के बस नहीं पता तो नहीं पता. इट्स मैथमेटिक्स. Yeah, sir. Of course. आपको इट्स बाइनरी के या तो 0 है या 1 है. देयर नथिंग इज Oh, ग्रेट. right. So तो I'm sorry. मुझे अभी याद आया कि मैंने क्यों 3 by 3 लिया था. The question says that n has. नहीं, मैं कह रहा था. Yeah, sir. N equals to 3 question ने specify किया था. मैंने यहाँ पे बस crux question का लिखा हुआ है, but the actual question says कि n equals to 3. N is n by n matrix, right? तो जब रेहान पहले सर उन्होंने. का सवाल ये नहीं है Sir. कि 3 by 3 आपने क्यों चूज किया. Oh, सर का सवाल है कि ये जो मैट्रिक्स आपने चूज किया है, जैसे ये मैट्रिक्स है 0 1 -1 और 1, यानी कि ये ऐसे मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट 1 आता है. तो ये कोई यूनिटरी मैट्रिसेस है. दीज हैव टू डू समथिंग विद यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. ये जो मैट्रिक्स तो 3 by 3 ही आपने लेना है, दैट इज फाइन, क्योंकि आपका सवाल n = 3 के लिए है. n = 3 का मतलब ही यही है कि आपने 3 by 3 के मैट्रिसेस के ऊपर ये सारा काम आपने करना है. और एक और चीज मुझे oh, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है, वो ये कि जो 2 by 2 में आपने ट्रेस को कंपेयर किया था,
तो 3/3 में आप जाएंगे तो उसमें एक और टर्म आता है, उसमें वो वाले टर्म्स भी शामिल होते हैं जो उनको ट्रेस, तो देखिए होता ये है कि ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। एक चीज होती है उसमें को फैक्टर्स आपने फाइंड किए होंगे, जैसे फर्स्ट 2/2 मैट्रिक्स, जैसे इस केस में 1 0 0 0 है, इसका Yeah. डिटर्मिनेंट, फिर 0 0 0 - 1 इसका डिटर्मिनेंट, चार इसमें से डिटर्मिनेंट्स आते हैं और उनका सम होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट Okay. में आप 3/3 को कंसीडर करते हैं, जो 2/2 का केस है उसमें हर 2/2 सब मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, डायगोनल, ठीक है, मेरा ख्याल डायगोनल और ऑफ डायगोनल दोनों। और जो ट्रेस है उसमें सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम आप कंसीडर करते हैं। तो इसमें सिर्फ ट्रेस से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको वो 2/2 डिटर्मिनेंट्स को भी सम करके देखना होगा कि क्या वो भी जीरो देता है, प्लस डिटर्मिनेंट। अब इसमें डिटर्मिनेंट तो मेरे हिसाब से 1 आ रहा है इस ए के केस में, तो वो जीरो कैसे होगा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यानी कि आप कहीं कोई इस तरह का क्लेम कर सकती है कि फर्ज करें कि हम कोई ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर करें जिसका डिटर्मिनेंट 2 आता है, तो वो भी मॉड 2 के अंदर जीरो होगा। तो हमने एक ऐसा मैट्रिक्स चूज किया है जिसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, ताकि हम इस चीज का काउंटर एग्जांपल क्रिएट कर सके। तो ये एक लॉजिकल आंसर इसका हो सकता है कि आपने मैट्रिक्स ए क्यों चूज किया। यार कि मैट्रिक्स ए Okay. ऐसा है कि जिसका डिटर्मिनेंट 1 आता है और ये किसी भी प्राइम में जीरो हो नहीं सकता, राइट। लेकिन ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट, इसकी कोई भी पावर लगे उसका भी डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा। तो वो जो डिटर्मिनेंट वाला कैलकुलेशन है वो तो सिरे से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक तरफ डिटर्मिनेंट 1 है और दूसरी तरफ भी 1 है, 1 = 1 इन एनी मॉड। तो ये तो दो तरह से आप इसका जवाब दे सकती है, कि एक तो ये कि इसका डिटर्मिनेंट चूंकि 1 है और 1 = 1 इन एनी एनी इंटीजर, और उस तरह से वो डिटर्मिनेंट वाला कैलकुलेशन स्किप हो जाएगा। शायद कोई इस तरह की आप चीज बना कर उसको काउंटर जस्टिफाई आप कर सकती है। Oh, okay. Just sir, just for context, by the way, जो मैंने दोनों matrix choose किए हैं, they are rotational matrices, but they have, I don't know how to जी जी, pronounce this, यूनिटरी यूनिटरी ITYM values. ट्रांसफॉर्मेशंस भी यही होते हैं, जी जी। Yeah, यूनिटरी so they rotate. ट्रांसफॉर्मेशंस ही रोटेशंस, दे आर Yeah, रोटेशंस इन केस। they're rotational values, right? So जो पेपर की मैंने जो लिंक भी है उसमें है कि matrices with, so I don't know how to pronounce this, EIGEN values. So आई 0, गेट, इट इज आई 0 गेट, आई eigen गेट वेरियंस, values. So यस। 0, 0, plus minus 1 and plus minus I. So अच्छा, matrices जो is, सबसे पहला सबमिशन आपने इसका दिया था उसमें मैंने आपको आई गेट वैल्यूज का बताया था, या शायद नहीं बताया था, लेकिन जो आप डिटर्मिनेंट ऑफ फाइल करती है ना, जी आप थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर, ट्रेस एक्स और डिटर्मिनेंट वाली इक्वेशन है, थोड़ा और ऊपर जाए, ये इसमें नहीं, जो शुरू के स्लाइड्स में थे। सो बेसिकली होता ये है कि हम ढूंढना ये चाह रहे हैं कि ए इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। जी हाँ, ए पे शायद कोई कोई कंडीशन होगी ना। थोड़ा सा हम्म जो एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन थी वो कहाँ है, थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाए। आई so फॉरगॉट व्हिच स्लाइड this वाज इट। से खत्म हो गया तो हाँ नहीं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ तो एक तो ये चीज ए है ना, टाइम्स ट्रेस एक्स। ऑफ ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेस ऑफ ए। एक मिनट में मैं देख के आपको बताता हूँ कि वो कौन सी है। रेहाम, जो शुरू की ये फर्स्ट 5 स्लाइड्स में कहीं जहां है ना ट्रेस ऑफ ए के, ये रुके रुके 8 पे है, 8 स्लाइड पे है। this. 8, जी जी जी। Oh, okay. शायद जो देखें आपकी एंट्रीज जो है ना, बड़ी स्पेसिफिक एंट्रीज हैं कि वंस हैं, जीरोस हैं, तो ये बहुत बड़ा Yeah. क्यों, 2 क्यों नहीं, So, 3 क्यों नहीं एंट्रीज। so we've taken eigenvalues. So matrices के साथ, क्योंकि फिर आसान हो जाती है working. If we take bigger values, then they'll increase bigger and then it'll become very difficult to simplify. The whole point of the sum is to somehow simplify it to actually find a बिल्कुल base पे coefficient क्या case से divide हो सकता है, right? तो जितनी छोटी वैल्यूज मेट्रिक्स में सबसे छोटी वैल्यूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 0, 1 and 1 0, राइट? तो फिर उनको इस्तेमाल किया है
ताकि हम बिल्कुल सिंपल। देखें, इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर एक बात कहता हूँ कि अब देखें जितनी आप टर्मिनोलॉजी यूज करते रहेंगे ना, तो वो फिर क्वेश्चन उसमें रेज होता रहेगा कि अब आप आइगन वैल्यू कह रही हैं, तो अब आपको नहीं पता कि व्हाट इज एन आइगन वैल्यू। So there's 0, 0, plus, minus 1 and plus minus So I. go to slide इट्स 14. रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। Rehan, आप slide 14 पे जाएं. Okay, sir. Here you have defined the characteristic polynomial. अच्छा, characteristic polynomial जो आपने z में लिखा है ना, जी। ये वही चीज है जो determinant of a minus x आइडेंटिटी नहीं है, ये वही चीज है। और इसके जो रूट्स होते हैं इस पोलिनोमियल के, ये डिग्री 2 का है, तो इसके दो पॉसिबल रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। और इसके रूट्स आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। ये Oh, कैरेक्टरिस्टिक okay. पोलिनोमियल जो आपने लिखा है, दिस इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ, अब यहाँ पे z आपने यूज किया है, तो ये होगा a माइनस z टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का मतलब ये है कि आप a को ही मैट्रिक्स अज्यूम करें और डायगोनल एलिमेंट्स में से z माइनस करें हर एक में से, ठीक है। Okay. और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास आएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे आइगन वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है रफली स्पीकिंग, ए इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा कि रोटेशन है, तो कुछ जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है कि दे आर बेसिकली स्केली, ठीक है। स्केली का मतलब ये कि कोई वेक्टर है, उसको रोटेट या फ्लिप करने के बजाय वो उस वेक्टर को 2 टाइम्स कर दिया या 5 टाइम्स कर दिया या छोटा कर दिया, माइनस में लेके गए, उसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कम या ज्यादा होता है, ठीक है। तो Okay. ए इज अप्लाइड टू एनी वेक्टर इज सेम थिंग एज जी जो एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू जो आप यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी कि आप बजाय मैट्रिक्स ए से ट्रांसफॉर्म करें या उस स्केलर वैल्यू से करें, दोनों सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो आइगन वैल्यू की चीज ये होती है। और इसमें जो सबसे स्टार्ट में जो आपको इक्वेशन दिया है, इट इज बेसिकली फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन आइगन वैल्यूज ऑफ, लिसन केयरफुली, finding the difference between eigenvalues of a to the power n और a, ठीक है। यानी कि a to Okay. the power k, इस केस में k होगा, a to the power k जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके आइगन वैल्यूज, और a के आइगन वैल्यूज का डिफरेंस लिया जा रहा है बेसिकली। लेकिन आपको जाहिर है उसको वो लीनियर अलजेब्रा के सेंस में नहीं लेना है, आपने उसको जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, कोएफिशिएंट्स की डिविजिबिलिटी के ऊपर ही रखना है। आप आइगन वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ना नई डिबेट्स निकल आएगी, और आपका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो उससे डिबेट कहीं और निकल जाएगी। लेकिन मैंने समराइज इसलिए किया कि ताकि आपको इन केस कोई पूछे कि इसका कोई आइगन वैल्यू से कोई ताल्लुक है या कोई इस तरह का कुछ हो सकता है, कोई पूछे। सो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो आइगन वैल्यूज है। Okay, sir. Thank you. तो रेहाम, बस एक जो मैं आपको फीडबैक यही देना चाहूंगा कि सबसे पहले थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हेस्ट करती हैं सवाल को आंसर करने में ना। थोड़ा सा पहले Sir, सवाल I'm just trying to answer the questions, even though sometimes I don't know the answer, because we've said कि हम इसे सिमुलेशन रख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी मैं जितना जवाब दे सकती हूँ मैं दे पाऊँ। बट बेटा, सर मैं मैंने ये सारे सवाल लिख लिए हैं ताकि मैं इसको अच्छा, बेटर आंसर कर पाऊँ, ऑफ कोर्स। मैं बेटा सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको एक फीडबैक वैसी देना या चाह रहा हूँ ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। कि आई फाइंड यू नॉट टू बी अ वेरी गुड लिसनर। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सवाल को ना बोलने दिया करें दूसरे बंदे को ना, सवाल के वो जितना लंबा उसने सवाल पूछने उसको पूछने दें, तसल्ली से सवाल सुन के और फिर आराम से उसको आंसर करें। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको आता है या नहीं आता, लेकिन वो अब जैसे हुआ था ना कि मैं मैट्रिक्स से कुछ और की पूछ रहा था, आप मैट्रिक्स के ऑर्डर का मुझे वो जवाब देनी थी, इसी मैं एंट्रीज की बात कर रहा था। तो अब वो देखें सर सजाद को समझ आ गया था क्योंकि उन्होंने सुन लिया था। तो आप कभी कभार जो है ना वो सुने बगैर आंसर करती हैं। तो एनीवे ये चीजें, मकसद ही यही है सारा डिस्कशन का, और सर सजाद ने बड़ा अप्रोप्रिएट आंसर आपको किए। सो बट हाँ, कुछ हद तक पता होना चाहिए कि क्यों एंट्रीज वो हैं और क्या है।
अच्छा, दूसरा मैं वैसे और सर अगर जी कोई चीज नहीं आती है ना, सो से कि आई डोंट नो, आई हैवंट थिंक अबाउट इट, या आई हैवंट लुक्ड इनटू, इस तरह से कोई उसको ना आई 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 डोंट नो द आंसर कहने के बजाय कोई थोड़ा उसको शुगर कोटेड में ये बता दे कि मैंने इस तरफ सोचा नहीं, या इस तरफ मेरे तवज्जो कम नहीं है, या कुछ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से वैसे माशाल्लाह आप लोगों की अंग्रेजी तो मुझसे बेहतर ही है, लेकिन ये कि ये जो आपने लाइन लिखी है, वे अ सिमिलर वे टू अराइव टू द कॉन्ग्रुएंस, मेरे ख्याल से ये अराइव एट द कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके सर। आप देख लीजिएगा। मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी चलें ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन ऑफ़ कोर्स हमारा फ़ोकस ये है कि मैथमेटिकली चीज़ें करेक्ट हों। तो बहुत अच्छी बात है, आपने सारे सवाल नोट कर लिए और इनको आपने जो है जैसे डिस्कशन हुआ है कि आपके देखें फ़ायदे के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनका आंसर जितना भी बेस्ट हो सके वो देख लीजिएगा। यस सर। सो फिर ये कि जो हमारा नेक्स्ट है, लास्ट जो हमारा सेशन है थर्सडे का, उसके लिए भी फिर कुछ प्लान जो है वो नूर के साथ डिस्कस करके हम लोग शेयर कर देंगे। सो जैसे लेकिन रफली हमने यही प्लान बनाया था कि उस दिन जो है हम आप सबको उस दिन पे इतना लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करेंगे और 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स को मौका देंगे कि वो 10-10 मिनट की अपनी प्रेजेंटेशंस दें दोबारा, बट इस उम्मीद के साथ कि वो इम्प्रूव्ड वर्जन्स होंगे और कि उसमें हम कोई हमें इतना निकल ही ना सके किसी किस्म का भी कोई एतराज, ना कोई टाइपोग्राफिकल कुछ भी। सो राइट, तो हम फिर इसको अगर किसी का कोई है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लें, अदरवाइज इन्हीं अपने प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं उन पे भी काम करें, अपनी प्रेजेंटेशंस पे भी काम करें। सो एंड डेडलाइन को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, वो सारा डिस्कशन ग्रुप पे हो चुका है। सो ठीक है, फिर इसको हम एंड करते हैं। खास शुक्रिया सर सज्जाद का कि वो बीमारी की हालत में भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सर ये जूम का फायदा ये है कि आप बिस्तर में लेट के भी कर सकते हैं, तो आप सबका शुक्रिया, तमाम दोस्तों का। चले ठीक है, फिर मेरे लिए दुआ करें। जी जी, सो ओके फिर, चले, अल्लाह हाफिज अल्लाह एवरीवन। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज सर।